This is Prisha Sureja, your host for today, and I would like to welcome all our audience who have joined us, all our key members, and all our dignitaries of Center for Distance and Online Education. A heartily welcome to all of you. It's very important for you all to know that how things actually work for the online learners, including the academics, the evaluation system, and many more such important things. So we have designed this upcoming module in a manner that will make you aware about the academic orientation and the evaluation system for the online learners. And for this, I would like to invite the professor and deputy director, Center for Distance and Online Education, Dr. Kulvinder Pal sir. Thank you, Prisha. I hope my voice is audible and my screen is visible to all. Absolutely, sir. Okay, so welcome again. Welcome to our online Virtuos to this session on academic orientation and evaluation system. I'll be covering in brief the two important aspects of your academic journey. One is the academic delivery, the methodology which will be followed to deliver the courses to you, and the crux of the evaluation system which will be followed for evaluation of your online programs. So we start with the key academic resources and the academic counseling modes which will be used for your study. No doubt you'll be having plethora of academic resources which would be available to you through your learning management system, LPU eConnect. But I'll be covering here the key academic resources which are quite important from your study point of view. So first such source is program guide. So what is a program guide? Program guide contains the detailed program scheme as well as the syllabus of all the courses which you'll be covering in your study program. And how to access program guide? These program guides are available on our website as well as on our learning management system. I hope you have got your login credentials for to access your learning management system by now. So how you're going to access this, that will be covered in the upcoming session, which will be taken by Neha ma'am and Anna ma'am. But here I'm just going to show you a sample program guide, and I'm just going to cover the important features of program guide so that you become aware of the things which are there in the program guides. So this is the program guide of MBA program. Hope it is visible on your screen. Yes, sir. Okay, so this program guide contains the related informations. This is related to MBA, so it covers the program specific outcomes, the salient features of the program, then the minimum as well as the maximum duration to complete this program, the medium of instructions. And the program guide also contains the program structure. It gives you the overview of the different types of courses which you will be studying in your program, along with the credit weights assigned to each type of course. And then this is the important section of program guide. It contains the entire program scheme of your program. So for example, in MBA there are 4 terms or 4 semesters. So what will be the courses which you are going to study in all those terms? Those are listed in the program guides, along with the course code, course title, and the credit weights which are assigned to this particular course. For example, if you can see on my screen, this course, the first course of MBA program in the first semester is Financial Reporting, Statement and Analysis. It is a 4-credit course, and in terms of assessment components, the 70% weightage is for this end term theory examination, and the 30% weightage for this course is for the continuous assessment, which would be assessed based on your performance in assignments and your academic participation. So this course is not having any practical component, so that's why 0 is mentioned here. So in this way, you can see you will find the nature of the courses which you will be studying during the entire program, along with the weightages, respective weightages for the different components of the course. Along with that, you will be getting choices in terms of some discipline specific electives or general electives. Their details are also mentioned in the program guides, that what kind of elective choices are available for you, and what are the terms for which these courses would be applicable to you. So everything, all the details are given in the program guides, and then the detailed syllabus of each and every course which is covered in your scheme. So all the topics, subtopics, number of units, course outcomes,
along with the reference to the books which are related to that particular course. Everything is given in the program guides. So you can go through the program guide. This will give you the overview of the nature of the courses which you are going to cover in your study program, along with the scheme and syllabus of the program. So this is all about program guide. The next important aspect of your academic resource is e-learning material. Now, e-learning material is a ebook. It contains the detailed course content which covers the entire syllabus of the course, because in the program guide just the topics are listed, but how you're going to study those topics, how you're going to study, from where did you get the content, that would be available in the form of ebook. We call it e-learning material. It is written in the self-learning and conversational style, so that it serves as a teacher function also. By reading it, you will feel that teacher himself is explaining the concept to you. And how you are going to access this is also available on a learning management system, and this is a one-stop solution to your all academic needs, because by going through this book you will be covering the entire syllabus of your course, and you do not have to search for the different books to collect the information and then compile it. Everything is already compiled and written by our university expert university faculty, is given in the e-learning material or ebook. So I'm just going to show you one such sample of the book and the features which are there in our e-learning material. So this is the one book, one e-learning material, financial reporting statement and analysis. If you can see, this is the details of the books, the details about the editors and the writers of the different units. Then the course contents are given. Then if you can see, each unit of the book, it starts with a unit structure which contains the list of the various sections which will be covered in this particular unit, along with the summary, keywords, self-assessment questions, review questions, answers to self-assessment questions, and the listing of the further readings. So everything for each and every unit, all the details are given in these units. It starts with the objectives. So in the beginning of each unit, you will find certain objectives which are expected that after studying this unit, you will be able to achieve those objectives. So, and there are certain specific features of e-learning material. It contains various illustrations, definitions, diagrams, then case studies if relevant. So there are so many things which will keep you engaged when you go through these books, and these and the entire content is written by keeping in consideration the prescribed syllabus of that particular course. So and if you see the last section of this particular unit, so this is the structure of one unit. So similar in the similar way, you will be getting the details about the various units of that particular learning material. For example, if you this is the ending section of a unit, so it ends with the summary. So for while preparing for exam, sometimes you look forward some brief notes. So if you can read the important points given in the summary, you can have a quick revision of the content of the unit. So this is a summary. All the points covered in the unit, they are again summarized in the summary section. Then the keywords which are used in the unit, they are again mentioned in very concise manner, so that you get the in one place you get all the details about all the keywords. Then there are self-assessment questions which are written in objective type of questions in the form of fill in the blanks, multiple choice questions, and so on. Then we have a subjective and analytical questions. We call it a review questions covering the entire content of the unit. And we also provide the answers to the self-assessment questions, objective type questions, which are there in the unit. So and each unit end with the further readings. It enlists the various books which you can refer to enrich your knowledge further, and the web links also. So you can refer to these web links to get the further information or further knowledge about the concepts. So this is the unit structure. Similarly, and all the units are written in similar style. So this is another aspect of our academic resources. Now, how the courses are delivered.
So we use two type of communication. One is called synchronous communication mode, and another is asynchronous communication. Synchronous means it's kind of live interaction. But here, what is I'm just now going to cover is the recorded video lecture, which is a asynchronous kind of communications, where here in this particular section, which is available to you through your LMS, you will find the recorded video lectures for each and every unit of all the courses which are applicable to your one particular semester. And here these are accessible to e-tutorial section of your LMS. Again, you will be I'm just reminding you again that in the next session you will come to know how you can access these e-tutorials or recorded video lectures. But I'm just going to give you the brief that these video lectures will cover the entire syllabus. For each unit of the course, there could be number of lectures because it is not feasible to cover all the content in one lecture. So, for example, here the screenshot which I have taken, you can see that the first unit contains 10 lectures of different durations. So when you finish all these lectures, you will also get the chance to attempt the self-assessment questions, and you need to pass this self-assessment questions in order to move to the unit 2. No doubt this will not be counted towards your the actual marks which you'll be getting, but yeah, this will be counted towards your the level of your academic participation which you need to maintain during your academic journey. So each unit contains video lectures, and then for all the units, the different video lectures are available which you need to see in order to attain the full mastery of the subject area. So in addition to the recorded lectures, you will be having your live virtual classes. And if you are very enthusiastic or very keen, you might have observed in your LMS that I think today or yesterday the timetable for your upcoming live virtual classes has been published. So these classes are starting from the 2nd of January, from Sunday. These will be held on weekends, from on Saturday and Sunday, but this time starting from this Sunday, it is starting. So these classes would be held course wise. This will be taken by the expert university faculties, and this will be held on weekends as per the dates given in the important dates. And you will also get the details about the classes in the timetable, which will be published, which is already published rather on your learning management system. The platform which will be used to conduct these classes is my class platform, and that is also accessible through your LMS. So you can access this platform through your LMS, and how to access that platform, that you will be guided in the upcoming sessions. Then you can have a chat session with your concerned faculty and peer, because based on your sections which will be formulated for you to attend your virtual classes, you will be automatically allocated to different groups, and the groups, in those groups you can chat with your concerned faculty and peers and get your doubts cleared. Then there is a discussion forum section that is also available on our LMS, and these are course wise discussion forum section platforms wherein you can post the topics related to the course and get your queries and doubts cleared from the peers and from the concerned faculty. Then we have a mentoring system also. In the LMS, you can see that there is a section called My Mentors, wherein you will be finding your allocated mentor. So for any kind of academic assistance, you can approach your mentor through an online appointment system, which is also available on your LMS. So in addition to these kind of activities, we organize various academic workshops, seminars, and guest lectures from time to time. You are requested to keep on checking your eConnect announcements so that you can register in those workshops, on these seminars, and you can participate in the same as per the nature of your course, as per the applicability of your course. So this is some of the aspects of academic counseling modes and the academic resources. The next important aspect is evaluation system. Now, after each semester, we'll be conducting end term or end semester examination, and these will be conducted as per UGC Distance Education Bureau guidelines through technology proctored online examination system. That you will be getting an overview of the platform which will be used to conduct these examinations in upcoming sessions. And what are the assignment weightages, that would also depend on the type of courses.
So if you see the scheme of your program, you will find that there are certain courses which are purely theoretical. So those theoretical courses will have two kind of component. One is end term exam, another is continuous assessment. So if you have only theory course in your scheme, in your program scheme, then the 70% of your marks would be based on your performance in end term exam in that particular course, and the remaining 30% would be allocated to the continuous assessment. And how we are going to conduct the continuous assessment, that would be based on your score in your assignments that will be provided to you through your LMS, and then your academic participation and engagement in different academic activities which you will be doing through your learning management system. I'll explain these two concepts in upcoming slides also. Similarly, if you have those courses which have only practical component, then again you will have to appear in the end term practical exam for that particular course. So end term practical exam would carry 70% weightage, and the remaining 30% weightage would be allocated to your performance in assignments, 20% for to assignment and 10% for your academic participation and engagement. There would be certain courses which would have both the components, theory as well as practical components. So in that means in those courses you will have to appear in two end term exams. One is for end term theory exam and another is for end term practical exam. And end term practical exam would carry 30% weight, and the remaining 30% weightage would be attributed to continuous assessment. Similarly, there would be certain fully project-based courses like term paper, dissertation projects. So in those courses, the entire evaluation would be based on your end term project examination. Now, if we talk about continuous assessment, I've already told that continuous assessment would be based on two components. One is assignments, another is academic participation. So if we talk about assignments, so how many assignments you will have to submit, that would depend on the credits of the courses for which you have enrolled. So for if you have the courses having 4 credits, then each 4 credit course you will be getting 2 assignments. You have to submit at least one assignment, but we suggest you to submit both the assignments because the best marks would be considered for your assessment. Similarly, if you have a course of 6 credits, then you will be getting 3 assignments for that particular course. You have to at least submit 2 assignments because best of the average marks of best 2 assignments out of 3 would be considered for your assessment. Now, how we are going to provide you assignments? And the assignments will be provided to you through your learning management system. You will be getting the announcement through your learning management system that yeah, assignments have been uploaded. So what you need to do, you need to download those assignments, get the printout of those assignments, then write the answers in your own handwriting in the prescribed space. And then after scanning, you need to upload it those assignments again on the CA submission interface. So you will be getting a timeline to upload those assignments. So you need to be very careful while submitting your assignment because it would be better to submit the assignment on time in order to avoid the last moment rush. And whatever would be the pattern of assignment to be followed, each assignment would consist of 2 questions of 10 marks each. And so total marks assigned to each assignment would be 20. Now, I've told you that there is one component which we call at academic participation and engagement. So 10% weightage for most of the courses is allocated to this particular component. So you are expected to maintain full academic participation in all courses, and based on your participation in these activities, your score would be calculated. And in your LMS, that score would be that the level of participation would be automatically updated based on your participation. So, for example, if you keep on viewing recorded lectures and keep on attempting the self-assessment questions which are there after each unit, so your score would automatically increase. Similarly, if you attend the live lectures, if you attend all the live lectures, so your score will again increase based on your attendance in the live lectures. So if you score at least 75% mark 75% in that in this particular component, then you are eligible to appear in the end term exam for that particular course. So if you score less than 75% in this particular component, then you will not be getting any marks. And if your participation is above 90%, then obviously you will be getting full marks
that means 10 marks out of 10. So we suggest you to keep yourself engaged in and keep yourself participating in these activities in order to enhance your score, because you need to at least have 75% attainment in this particular component. Now, what will be the question paper pattern for the end term theory exam? The question paper pattern would consist of both the mix of objective as well as subjective questions. And how we will be conducting end term practical or project examination, that would be based on the online viva or online presentation which you need to give based on the practical or project report which you will be submitting through our learning management system. The schedule of viva will be intimated to you along with the date sheet of your end term examination. Now, what happens if you are not able to pass a particular course? So if you are not getting passing marks, you will be getting a reappear in that particular course. That means your result will be declared with E grade in that particular course. But you can register for reappear in any of the subsequent end term exams. Along with your normal examination, you can appear for the reappear examination of the previous term as per the maximum duration of the program. And there is an applicable fee, rupees 750 per component of the course, but we advise you to keep on checking the updated guidelines and the updated fees as and when it is notified by the university. If you are not satisfied with the marks of grade in your end term exam, you can apply for revaluation, but that is applicable only for theory courses, and there is also applicable fee for that. And the registration for both these provisions will be held would be done only through eConnect, or that is your learning management system, and the dates for those will be announced by the university from time to time. So I again advise you to keep on checking your eConnect announcements, because that is our formal way of communicating the important dates and the deadlines to the students. Now, what is the passing criteria? In order to achieve a pass grade in each course, you need to have on overall 40% marks. If you have only theory course, so you need to, because I've already told you that the only theory courses would have two components. One is end term exam and another is continuous assessment. In end term exam, you need to score at least 30% marks. But if we combine these marks with continuous assessment, then overall you must score 40% marks. So for example, in your end term exams, you get 35 marks, but you did not appear for your assignments or did not appear in CA components. So what happens? Your one condition is fulfilled. You have got 35 marks in end term exam, but your overall condition is not filled. So that means you will not be able to pass in that particular course. So overall, you need to score 40% marks. And for those courses where we have both the component theory as well as practical, so in these kind of courses you have to score at least 30% marks in end term theory exam as well as in end term practical exam, but combined with CA you need to score aggregate 40% marks. For the courses having only practical component, again the same condition, in end term exam 30% and overall 40% marks including CA. There are project or dissertation or term-based, paper-based course here because CA component is not there. So you need to score 40% marks in end term project examination. Now, we do not follow normal conventional marking system here in university. We follow grading system. So each the marks which you will be obtaining in each course will be converted into certain grades, and those based on those grades you will be getting your CGPA score. CGPA is cumulative grade point average. So when you complete your entire program, the CGPA would decide upon your percentage. Suppose after completing your entire program, you get a CGPA of 6. So if you want to convert it into percentage, the conversion factor would be 10. That means you need to multiply it by 10. So your percentage for this particular program would come out to be 60%. So this is, and to complete your program successfully, you need to score at least 5 CGPA. So this is the passing criteria. So so I think I have covered most of the important aspects of the academic orientation and evaluation system. Still, if you have any query, you can always write to us in chat box or through email. I think most of you must have received a welcome email from our side. So in that welcome email, we have already shared the detailed evaluation related guidelines with you. So you can also refer to that document. But for updated information, I again suggest you to keep on checking the updates from the university from time to time. So thank you from my side. I think I've covered both the aspects. And
Once again, I welcome you all to this online LPU online system. Thank you. Thank you, Prisha. Over to you. Thank you so much, sir, for giving such an informative presentation to all the watchers out here. And moving to the most important module of the session, that is the learning management system, let me tell you all that this platform will play a very crucial role and will keep you connected throughout your online learning journey. And it will be one of your most important buddies throughout your e learning program. And for this, I would like to invite the Deputy Director, Center for Distance and Online Education, Ms. Neha Khosla, ma'am. Thank you, Prisha. Hope my screen is visible to all. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, Kulvinder sir, for your informative session. Let's start with the learning management system. This is your learning management system. Anybody knows its name? Its name is LPU eConnect. Direct link to access this platform is lms.lpuonline.com. Why LPU eConnect? This is the connect between you and us with the university, right? See, इन कमिंग टाइम्स दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड आई नो अभी हम इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं इसमें बट इन टाइम्स टू कम हम आपकी सारी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे टू परफॉर्म वेल एंड अभी जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं हमारे साथ राइट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के क्रेडेंशियल्स मिल गए होंगे बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी क्रेडेंशियल्स नहीं मिले हैं द रीजन इज कि उन बच्चों के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होंगे तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दो स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो सो दैट आपका एकेडमिक सेशन जो शुरू होने वाला है उसमें कोई डिले ना हो और आप टाइमली अपनी क्लासेस अटेंड कर पाए See, these are the most few key modules of learning management system, like my account section. This is your personalized account for your ID card. Your profile will be there. E-communication module. This is going to be the most important module for you. I know अभी हमारी तरफ से आपको बहुत सारे messages, calls, emails आ रही होंगी. It must be irritating. आपको irritate नहीं करना चाहते. Really, but from now onwards, हमारी जितनी भी communication हम आपके साथ करेंगे, that will going to be through learning management system, e-connect के through होंगी सारी communication. For that matter, हम बार-बार आपको disturb नहीं करेंगे. The only request is कि please this app is also available on mobile. तो आप डाउनलोड करके रखिए और at least decide a time to check the communications by the university तो अपनी नीड्स पे अपना चेक कर पाएंगे अपनी communications under the announcement and personalized message section. Then examination connect is there. LMS की credentials हैं. By using those credentials you can access this platform. Other than e-books, e-journals, e-newspapers, everything will be available there for you. And ये platform जो आपको e-books आपके course wise e-books available हैं in the learning management system, other than that है the most important section then further is e-tutorial section, course wise access to recorded videos followed by self assessment. और further इसमें other features are also there like transcripts होंगे वहाँ पे, e-resources होंगे, e-notes होंगे, आप अपने colleagues के साथ कोई भी questions share कर सकते हैं. The next is virtual class link of your live classes. Then chat and discussion forum. Why these interfaces are there? कुलविंदर सर ने अभी वो काफी aspects share कर दिए हैं आप लोगों के साथ. These platforms are made for you to clear your academic doubts related to your curriculum. Then most important thing, how to log in. आपके पास दो तरीके हैं लॉगिन करने के. वन, आप डायरेक्ट लिंक यूज करके इसको लॉगिन कर सकते हैं, दैट इज lms.lpuonline.com. द अनदर वे इज आप वेबसाइट के ऊपर जो डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है टॉप राइट में, यू कैन यूज दिस लिंक एज वेल. हाउ टू लॉग इन, आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रेडेंशियल्स शेयर किए गए हैं, बाय यूजिंग दोज क्रेडेंशियल्स यू कैन लॉग इन टू योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. बॉटम पे देयर आर सर्टेन लिंक्स आर देयर. ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स हैं. प्लीज लाइक दीज पेजेस एज वेल. Then this is your dashboard. आप लॉग इन करने के बाद this window will be displayed to you. राइट यहाँ पे सेक्शंस है, लेफ्ट पैनल है, मिडिल पैनल है, द टॉप बार है. ये क्विक लिंक्स दिए गए हैं डैशबोर्ड के ऊपर ताकि आपको इधर उधर चीजें सर्च आउट नहीं करनी पे. आई नो एवरीबडी इज वेरी स्मार्ट नाउ. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सेस करना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल राइट नाउ. तो बहुत डेप्थ में बेसिक फीचर्स आई वुड नॉट बी एक्सप्लेनिंग मच, बट जो मेन कंसर्न्स हैं, एरियाज हैं आपके लिए, मैं वो जरूर एक्सप्लेन करूंगी.
देन ये क्विक लिंक्स हैं जो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, वर्चुअल क्लास, चैट, ऑनलाइन असेसमेंट, डिस्कशन फोरम, एग्जाम्स, रिसर्च, प्लेसमेंट एक्सेट्रा। देन मिडिल सेक्शन में होंगे ई ट्यूटोरियल, लर्नर्स पार्टिसिपेशन सेक्शन, जिसके बारे में कुलविंदर सर ने भी बात की थी, जैसे एकेडमिक पार्टिसिपेशन के बारे में, द 10%, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होगी अंडर दिस सेक्शन। हैपनिंग्स, इवेंट्स, टुडेज वर्चुअल क्लास, दैट विल बी योर टाइम टेबल, कैलेंडर, टर्म प्रोग्रेस, पेंडिंग असाइनमेंट्स, माय messages, mentor, announcements, everything will be there on your dashboard. We'll start with the left side quick links. लेफ्ट साइड पे बहुत सारे क्विक लिंक्स हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स. फर्स्ट इज वर्चुअल क्लास. क्विक लिंक फॉर वर्चुअल क्लास इज दिस, द शेडेड एरिया. दो तरीके हैं वर्चुअल क्लास अटेंड करने के, दैट इज योर लाइव क्लासेस. एक, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. द अनदर वे इज, ये इसलिए है कि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है कि आपका डायरेक्ट लिंक नहीं चल रहा है, तो आप डायरेक्टली ये लिंक यूज कर सकते हैं, विच इज myclass.lpu.in with the same credentials of your learning management system. तो आप वहां से भी डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. द टाइम टेबल ऑफ योर क्लासेस विल बी अवेलेबल अंडर टुडेज वर्चुअल क्लास सेक्शन. अभी भी अवेलेबल, अब मतलब टुडे और कल तक आपका टाइम टेबल वहां पे अवेलेबल हो जाएगा फॉर योर कमिंग क्लासेस. दिस इज द क्विक लिंक. जब आप वहां पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपको नजर आएगी, एंड ये शेडेड एरिया पे क्लिक करने पे यू विल बी एबल टू ज्वाइन योर क्लासेस. ये वाला सेक्शन इज फॉर attending the classes. I would not be explaining much on this platform because after me, Tushar sir will be explaining this part in detail. This as well as the examination section, वो अच्छे से explain करेंगे आपको in detail. The next quick link is chat. इसको हम LPU live chat भी कहते हैं. This same platform, our LPU, our distance as well as regular, both students are using this platform right now. Again, आप यहाँ से directly भी join कर सकते हैं. The another way to join is by using this link, which is lpulive.lpu.in, by using the same credentials of your LMS. This particular platform is made for you to interact with your fellow student as well as with the faculty. Here my request is कि यहाँ पे आप interact कर सकते हैं with your faculty, with students as well, but please use this platform for academic interactions only. Then this is the LPU Live. ये लेफ्ट पार्ट में जो आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जो कोर्सेज आपको रजिस्टर हुए होंगे, राइट, उस कोर्सेज में जो जितने भी बच्चे रजिस्टर होंगे उसके यहाँ पे ग्रुप्स बन जाएंगे, एंड फर्दर द कंसर्न फैकल्टीज विल बी मैप्ड ऑन दोज ग्रुप्स, और आप फर्दर अपनी फैकल्टी के साथ यहाँ से इंटरैक्ट कर सकते हैं. बट प्लीज फॉर द एकेडमिक पार्टिसिपेशन ओनली. अभी आप लोगों को ग्रुप्स वहां पे नजर नहीं आ रहे होंगे. जैसे ही आपका टाइम टेबल अप होगा, सेशंस आपके शुरू होने वाले होंगे फर्स्ट क्लास, उससे पहले आपके ये सारी ग्रुपिंग वगैरह हो जाएगी, एंड दोज ग्रुप्स विल बी विजिबल टू ऑल. यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे यू कैन शेयर एनी काइंड ऑफ फाइल्स विद योर फेलो स्टूडेंट्स एज वेल एज जो फैकल्टी है आफ्टर द क्लासेस, दे कैन ऑल्सो शेयर द रिसोर्सेज हियर. The another quick link is online assessment. The another way to log in is ये आप डायरेक्ट जो लिंक है ये भी यूज कर सकते हैं. अगेन oas.lpu.in by using your LMS credentials. Again, इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको टेस्ट दिए जाएंगे, फैकल्टी कोई भी टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे दे सकती है, कोई भी जनरल टॉपिक्स के ऊपर हो सकते हैं. दोस टेस्ट आर गोइंग टू बी द प्रैक्टिस टेस्ट भी हो सकते हैं, इवेलुएटिव भी हो सकते हैं, वो जैसे आपकी फैकल्टी जो है मेंशन करेंगे, टीचर्स मेंशन करेंगे. बट जो टेस्ट आपको यहाँ पे आएंगे, दोस टेस्ट विल बी अदर देन द टेस्ट सेल्फ असेसमेंट्स विच आर अवेलेबल अलोंग विद योर ई ट्यूटोरियल्स, राइट, ये उसके अलावा होंगे. देन ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा, यहाँ पे आपके जो भी टेस्ट होंगे इस तरीके से वो सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. उस पर क्लिक करने पे यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट. आफ्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, द रिजल्ट विल बी ऑटो कैलकुलेटेड. देन नेक्स्ट क्विक लिंक इज फॉर डिस्कशन फोरम. ये कोर्स वाइज फोरम है जहां पे आप अपने कोर्स रिलेटेड क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. सी LPU लाइव भी है जहां पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो और फैकल्टी के साथ या स्टूडेंट के साथ. यहाँ पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो फॉर योर पर्टिकुलर कोर्स, जो भी आपको कोर्सेज रजिस्टर हैं. और टर्म 1, जैसे आप अभी टर्म 1 के लिए रजिस्टर हो, तो अभी वहां पे आपके टर्म 1 के कोर्सेज होंगे, एंड जब आप सेकंड सेमेस्टर में हो जाओगे तो वहां सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज ऑटोमेटिकली व्यू होने शुरू हो जाएंगे. बट दिस प्लेटफॉर्म विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय योर कंसर्न फैकल्टी. और यहाँ पे जो भी पोस्ट होगी, जो भी आप वहां पे क्वेरी डालोगे, वो आफ्टर द अप्रूवल विल बी विजिबल.
Another important thing regarding the discussion forum is, जैसे कि केपी सर ने कुलविंदर सर ने अभी मेंशन किया कि 10% is there for academic participation. So discussion forum is going to be one part of that academic participation. आप जो भी इसमें पोस्ट डालेंगे उसका काउंट उसके अंदर कंसिडर होगा, राइट? देन ये आपका डिस्कशन फोरम का प्लेटफॉर्म रहेगा। ऑन दिस लेफ्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया, जो आपके करंट टर्म के कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगे, राइट? इसको क्लिक करने पे, किसी भी कोर्स को क्लिक करने पे आप उसका डिस्कशन फोरम के ऊपर अपना थ्रेड शुरू कर सकते हो। देन जो भी आपकी समरी रहेगी, आपने जो भी पोस्ट डाले हैं, रिप्लाईज किए हैं, वो समरी यहाँ पे विजिबल होगी अंडर दिस सेक्शन, एंड ये कोर्स वाइज भी होगी, ओवरऑल भी व्यू होगी। टू पोस्ट एनी क्वेरी यू कैन क्लिक ओवर देयर पोस्ट क्वेरी स्लैश टॉपिक। आप अपना कोई नया टॉपिक डाल सकते हो, या जो भी आपके फेलो फ्रेंड्स ने वहां पे कोई भी पोस्ट डाली हुई है कोर्स में, उसको रिवर्ट कर सकते हो। योर कंसर्न टीचर कैन ऑल्सो पोस्ट एनी टॉपिक, and this platform can be used as synchronous and asynchronous in both ways. Synchronous, जब आपको फैकल्टी को शेड्यूल दे सकती है that yes I am available during this time for discussing this particular topic जो टीचर ने वहां पोस्ट किया है, और रियल टाइम पे आप उस पर्टिकुलर टाइम पे लॉग इन होकर फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सिंक्रोनस मोड। अगर आप अपने पेज पे जब पढ़ रहे हो, आपको कोई क्वेरी का आंसर करना है या कोई न्यू क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग योर करिकुलम, तो वो आप पोस्ट कर सकते हो और टीचर वो बाय द नेक्स्ट डे और विद इन 42 आवर्स द टीचर विल रिवर्ट टू दोज क्वेरीज। और आपके इवन फ्रेंड्स जो हैं वो भी उसका आंसर कर सकते हैं, दोज फ्रेंड्स जो इस पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स। जो भी आप यहाँ पे पोस्ट डालेंगे विल बी विजिबल लाइक दिस, और जिस स्टूडेंट ने डाली है द स्टूडेंट्स नेम विल बी देयर कि किसने डाली है, किस टाइम पे डाली है। यू कैन फर्दर लाइक और डिसलाइक योर पोस्ट। Then quickly the other link is for the examination, as I earlier told कि ये जो link, इसके बारे में मैं ज्यादा explain नहीं करूंगी, तुषार सर will be explaining this section in detail, but आपके जो examination, online examination होंगे, during that examination your authenticity will be verified before the examination. Proctor जब आपकी proper checking कर लेगा, your ID card will be verified. After that you will be allowed to give the examination. This is the quick link to attend the examination. Then more quick links are there, research placements, etc. Middle section. The most important part here is the e-tutorial. I know you people must be facing some issues under this section, but once your session is start, आपके सारे issues उसके पहले resolve हो जाएंगे. So this is the e-tutorial section. जो भी आपके first term के courses हैं, राइट, वो सब कोर्सेज यहाँ पे विजिबल होंगे अंडर दिस सेक्शन। हियर माय रिक्वेस्ट इज कि आपके जो प्रोग्राम गाइड है, जिसके बारे में अभी कुलविंदर सर ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, प्लीज मैच योर फर्स्ट टर्म कोर्सेज विद दीज कोर्सेज एज वेल, क्योंकि ये क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये आपके टर्म 1 के कोर्सेज हैं। इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है, प्लीज डू इन्फॉर्म अस। मिसमैच अगर कोई भी लगता है, ऐसी हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, वी प्रोवाइड, अपनी तरफ से सब कुछ कर देते हैं, बट जब लाइव जाती हैं चीजें, सम टाइम वो इश्यूज हम अपने एंड पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब आप लोग हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं, देन वी केम टू नो अबाउट इट। कुछ चीजें तो हम कर लेते हैं, वो हम पहले ही रिजॉल्व कर छोड़ते हैं। So the tutorial section में क्या होगा? This is the quick link to current terms pre-recorded video module named as e-tutorial। और इसमें क्या क्या कवर होगा, आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे। आपका जो pre-recorded videos हैं, these are further divided into the units, followed by the self-assessment। और क्या होगा? transcripts, e-resources, e-notes, ask a question with your mentor or friend। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एक टाइल पे। देन आपका जो कोर्स कंटेंट है, दिस कंप्लीट कोर्स कंटेंट इज डेवलप्ड बाय आवर ओन फैकल्टी, जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, प्रोडक्शन तक इन हाउस हुई है, राइट। तो ये जो टॉप पे बार है, दैट इज योर कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल, और दिस ब्लू बार जो है, ये आपकी जो इस पूरे कंप्लीट कोर्स की प्रोग्रेस है वो डिपिक्ट करेगी, राइट। देन ऑन दिस राइट साइड, दिस सेक्शन इज यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, राइट। ये जो रेड बार है, ये आपके इस पर्टिकुलर यूनिट की जो प्रोग्रेस है उसको डिपिक्ट करती है। ब्लू बार शोज की ये कितने आर का कंटेंट है इसके अंदर, एंड दिस नंबर 2/2 सेज कि कितने लेक्चर्स हैं एक यूनिट के अंदर। जरूरी नहीं है देयर इज गोइंग टू बी ओनली 1 लेक्चर, देयर कैन बी मोर देन 1 लेक्चर एज पर द डिमांड ऑफ द सिलेबस। सिलेबस में जितने रिक्वायर्ड हैं उतने टीचर ने लेक्चर्स बनाए हैं, राइट। Every unit is followed by the self-assessment. Along with that,
जो भी आपकी यूनिट्स हैं, ये जितनी यूनिट्स हैं, आपको सीक्वेंस में ही स्टडी करनी पड़ेंगी। आप सीधे ही फर्स्ट यूनिट से 14th यूनिट पे जंप नहीं कर सकते। टू मूव टू द नेक्स्ट यूनिट यू हैव टू पास द सेल्फ असेसमेंट। वो सारे वीडियो स्टडी करने पड़ेंगे एंड सेल्फ असेसमेंट देनी पड़ेगी, तभी सेकंड यूनिट जो है वो अनलॉक होगी। राइट, अगर आप मूव करते जंप करते हो वीडियोस, तो सच काइंड ऑफ मैसेज विल बी देयर कि आपने अपनी प्री रिक्विजिट्स जो है पूरी नहीं की है। दिस इज द सेल्फ असेसमेंट सेक्शन। जितने भी सेल्फ असेसमेंट हैं वो सारे एमसीक्यूज टाइप हैं, और उस पर एक पासिंग क्राइटेरिया है। मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो आपको अटेन करने। जब तक आपके 50% मार्क्स नहीं आ जाते, आपका सेल्फ असेसमेंट पास नहीं होगा, और शफल करके क्वेश्चन जो है वो रीओपन होते रहेंगे। तो यू नीड टू हैव 50% ऑफ द पासिंग मार्क्स। बट ये इसीलिए है कि आई नो जो वीडियोस हैं हम इजीली उसको स्क्रॉल करके पास कर सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन इसीलिए हम आपको तंग नहीं करना चाहते, बट ये कंडीशन सिर्फ इसलिए है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा वीडियोस में सुन लीजिए कि वहाँ क्या है। तो अगर आप मूव करके आगे जाना भी चाहोगे, तो टू पास द सेल्फ असेसमेंट यू हैव टू स्टडी योर लेक्चर्स फैकल्टी ने जो दिए हैं। जब आप पास कर लेते हो, सच काइंड ऑफ मैसेजेस विल बी देयर कि आपका क्या स्टेटस है उसमें। Then the lower part of the video section, first is the overview of the lecture। जो आप ऊपर lecture देख रहे हो, हर lecture का, हर lesson का नीचे एक overview होगा कि आपको टीचर उस lecture में, short description है कि आपको टीचर उस lecture में पढ़ाने क्या वाला है। Next is the transcript। जो भी टीचर वहां बोल रहा है, everything is there in the documented form, exactly जो वो बोल रहे हैं, right? तो कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं सुनने में, उनको नहीं इतना ग्रास्प होता, तो अनदर ऑप्शन इज कि वो यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करके वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। देन अदर ई रिसोर्सेज, जो भी पीपीटीज आवर फैकल्टी इज यूजिंग इन दी लेक्चर्स, वो सारी पीपीटीज आपको यहाँ पे रिसोर्सेज की फॉर्म में या अटैचमेंट के अंदर अवेलेबल होंगी। यू कैन फर्दर डाउनलोड दीज पीपीटीज। हर लेक्चर में जो भी पीपीटीज है सारी यहाँ पे होंगी। यहाँ पीडीएफ यूज हुआ है, व्हाट्सएवर रिसोर्सेज दे यूज, वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। देन द ई बुक्स, यहाँ पे क्विक लिंक इसलिए दिया गया है कि वाइल स्टडिंग अगर आप देखना चाहते हो कि आपके लेसन में क्या है, तो आप यहीं से उसको एक्सेस कर पाए, आपको अपना मॉड्यूल छोड़ के कहीं और नहीं जाना पड़े। Then the next is e-notes। See, everybody is having habit कि जब भी हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं साथ में, तो है you need not to have copy with you। वो भी everything is online, तो आपके जो नोट्स भी हैं वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे, और वो भी जो जितने भी नोट्स आप बनाएंगे, जो लेक्चर आप ऊपर पढ़ रहे हैं, नीचे वो सारे यूनिट वाइज एंड लेक्चर वाइज कैन बी सेव्ड है। नीचे जो भी आप टाइप करेंगे, सेव करेंगे, तो वो यहाँ नीचे सेव होता जाएगा। ये तभी डिलीट होगा अगर आप डिलीट करेंगे, एंड लेटर ऑन इवन इफ यू वांट, ये जो आइकन है छोटा सा, इसको क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। आपने आधा लेक्चर किया है, आधे नोट्स बनाए हैं, लेटर ऑन यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन एंड एडिट योर नोट्स, एंड फर्दर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इफ यू वांट, तो आप यहाँ ये जो है पीडीएफ की फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये यहीं रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट योर नोट्स। आपको जब भी एक्सेस करने हैं, आप ओपन करके वहीं से शुरू करके लेटर ऑन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉपी गुम जाती है, ये घूमेंगे नहीं आपके। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ आप जो भी आप वीडियो स्टडी कर रहे हो उसके रिलेटेड अभी जो आपके क्वेरीज हैं, वो ओपन एंडेड सेक्शन में अगर आप डालेंगे, दैट दोज क्वेरीज विल बी विजिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। और अगर आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से कुछ पूछना चाहते हैं, यू विल सिलेक्ट दिस सेक्शन, तो वो क्वेरी पर्टिकुलरली आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर को जाएगी एंड दे कैन आंसर योर क्वेरीज। सी, अभी कुछ फीचर्स में, जैसे अभी आपका सेशन शुरू होना है, तो हर सेक्शन में द फैकल्टी विल बी एलोकेटेड। तो जैसे जैसे फैकल्टी आपके एलोकेट हो जाएंगे, टाइम टेबल आपका अवेलेबल हो जाएगा, सेशन शुरू हो जाएगा, तो सारे जो आपके इंटरफेसेस हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे एंड रिस्पॉन्सिव भी हो जाएंगे। The next is learners participation, real time calculation of all academic participation components and course wise display of all the activities। जो 10% हम बात कर रहे थे एकेडमिक पार्टिसिपेशन की, सी 75% जो सर ने भी बोला, उसको देख के प्लीज घबराइएगा नहीं, बिकॉज उसको हमने काफी रिलैक्स किया है कि वो जो 10% है दैट इंक्लूड सो मेनी एक्टिविटीज, कि आपकी जो लाइव क्लासेस हैं, जो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ रहे हैं, जो आप क्विज दे रहे हैं आफ्टर एवरी यूनिट, जो आप डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी चीजों को कंबाइन करके आपको 75% लेने हैं, और उसकी वेटेज ओवरऑल जो है दैट इज ओनली 10%। राइट, ये सिर्फ इसलिए है, सी कुछ
नॉर्म्स हैं विच वी हैव टू फॉलो। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के लिए कि आपको साथ साथ रूटीन में पढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें द मेन पॉइंट इज कि आपको 15 डेज में एटलीस्ट इंश्योर कि आप एटलीस्ट 2 आवर्स अपने लर्निंग मैनेजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं while participating in these activities। दिस इज योर लर्नर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड पे जो भी आपके करंट टर्म, ये टर्म जो भी यहाँ पे चलेगा ये टर्म वाइज चलेगा, और जो कोर्सेज होंगे वो टर्म 1 के होंगे। जैसे ही आप सेकंड टर्म में जाएंगे तो सेकंड टर्म के कोर्सेज विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द एरियाज। ये जो आपको कोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, इनमें जो जो आपके पार्टिसिपेशन है अंडर दीज कंपोनेंट्स लाइक लाइव लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, क्विज आफ्टर एवरी यूनिट, डिस्कशन फोरम, कोर्स प्रोग्रेस। सी, आपने यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, टोटल ओवरऑल 12 लेक्चर्स आपके जैसे लगने हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के। 12 कहाँ से आया? दिस इज एज पर द क्रेडिट्स ऑफ एवरी कोर्स। हर कोर्स के क्रेडिट हैं एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो जैसे 4 क्रेडिट का अगर कोर्स है तो देयर हैज टू बी 12 लाइव लेक्चर्स। तो उसके बेसिस पे ये 12 यहाँ पे आया, हमने अपनी मर्जी से ये 12 नहीं किया है, राइट। तो इसमें जैसे जैसे आप क्लासेस लगाते जाओगे आपकी जो अटेंडेंस होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे नंबर वो अपडेट हो जाएगा। द अदर थिंग कि आपकी जो अटेंडेंस है जब आप लाइव लेक्चर्स लगाओगे तो अटेंडेंस विल बी अपडेटेड विद इन 42 आवर्स। इमीडिएटली डोंट एक्सपेक्ट कि आपने जब अभी क्लास लगाई है और साथ में ही वो अपडेट हो जाएगी, बिकॉज द अटेंडेंस जो है बाद में वेरीफाई होके तब अपडेट की जाती है आप लोगों की, बिकॉज ऑनलाइन है तो उसके फ्यू डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। देन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, यहाँ पे कैसे, अब आप सोचोगे कि हम इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, जो टोटल आवर्स हैं आपका जो पूरा कंटेंट है उस पर्टिकुलर कोर्स का, उतने जो उसके जो आवर्स हैं उसके बेसिस पे है। तो टोटल आवर्स यहाँ मेंशन रहेंगे और उसमें से जितने आवर्स आप स्टडी करते जाओगे यहाँ अपडेट होते जाएंगे और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज अप होती जाएगी। फर्दर द क्विज आफ्टर एवरी यूनिट, जो भी आपका ये कोर्स कंटेंट है हर यूनिट के बाद जो सेल्फ असेसमेंट्स है, लाइक देयर आर 14 यूनिट्स, तो 14 सेल्फ असेसमेंट्स है। जैसे जैसे आप यूनिट्स पास करते जाओगे यहाँ पे नंबर अप होता जाएगा। डिस्कशन फोरम, अभी यहाँ पे हर कोर्स के लिए हम एक मिनिमम नंबर डिसाइड कर देंगे, राइट, कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट, मैक्सिमम इतने पोस्ट, मिनिमम नहीं, यू कैन से मैक्सिमम, हम मिनिमम कह लो कि मिनिमम हम कंसिडर करेंगे कि इतने पोस्ट होने चाहिए। अगर स्टूडेंट ने मिनिमम इतने किए हैं तो उसको इतनी वेटेजेस, उसके हिसाब से वो वेटेजेस जो है बढ़ती जाएंगी। बट जितने भी डिस्कशन फोरम में पोस्ट हैं वो वाले काउंट होंगे जो आपके कंसर्न फैकल्टी ने अप्रूव किए हैं। रैंडम आप कुछ भी डालोगे तो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर दिस सेक्शन। सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा सा तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। फर्दर दिस कोर्स प्रोग्रेस, आपकी ओवरऑल कोर्स की जो प्रोग्रेस है दैट विल बी कैलकुलेटेड हियर ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे ये कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे ये प्रोग्रेस भी आपकी बढ़ती जाएगी, राइट। सो आपको मिनिमम 75% ऑफ द स्कोर इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। देन अभी आपने सारे कोर्सेज की कंबाइन प्रोग्रेस देखी, अपनी पार्टिसिपेशन देखी जो रियल टाइम पे कैलकुलेटेड रहेगी। फर्दर हर टाइल के ऊपर व्यू प्रोग्रेस करके एक आइकन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर पर कोर्स वाइज जो आपकी प्रोग्रेस है, यानी कि इस कोर्स का आपका क्या स्टेटस है वो विजिबल रहेगा। इसका पर्पस क्या है कि जो भी आपकी अटेंडेंस या स्कोर चल रहा है उसके बेसिस पे आपको सिस्टम यहाँ पे ऑटो मैसेजेस बताएगा कि आपका क्या स्टेटस है। जैसे कि यहाँ वो बता रहा है, योर अटेंडेंस रिकॉर्ड इज वेरी पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू बी वेरी रेगुलर इन पार्टिसिपेटिंग। तो आपको रेगुलरली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो आपको गाइड करता रहेगा कि आपका स्टेटस क्या है, तो थोड़ा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट जरूर करिए। फर्दर सी, यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि मैम ने भी बताया, मनीष सर ने भी बात की, वी गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट। हमारे लिए सारे स्टूडेंट रेगुलर, डिस्टेंस, ऑनलाइन मोड सब इक्वल हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो एलपीयू में जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं तो रियल टाइम में आपको वो चीजें डेली बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या चल रहा है, और लेटेस्ट हैपनिंग्स विल बी रिफ्लेक्टेड टू यू। ये एलपीयू क्या है, ये फिल्टर्ड नहीं है कि कोई डिस्टेंस की है अलग से है या रेगुलर की अलग से है, कंबाइन, सबकी कंबाइन है। आपकी भी कोई हैपनिंग्स होंगी, रिलेटेड चीजें होंगी, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। देन अनदर इज इवेंट्स एट एलपीयू, जितने भी इवेंट्स होंगे वो इस सेक्शन में आपको विजिबल रहेंगे, जहां पे आपको अगर किसी को ज्वाइन करना है वो फर्दर अनाउंसमेंट्स आपको आएंगी। ये पूरी यूनिवर्सिटी के जो इवेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे वो इस सेक्शन में विजिबल रहेंगे। फर्दर यू कैन ऑल्सो वॉच द हिस्ट्री ऑफ योर इवेंट्स या अपकमिंग इवेंट्स यहाँ से चेक कर सकते हो। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए जो भी आपको अनाउंसमेंट्स आएंगी तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स। Then your
timetable under this section named as today's virtual classes. आपका timetable will be reflected. Hopefully by tomorrow your timetable will be there. और टाइम यहाँ क्लिक करने पे आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हो टाइम टेबल की. ये अटेंडेंस जो यहाँ पे आएगी, दिस अटेंडेंस इज गोइंग टू बी द ओवरऑल अटेंडेंस ऑफ योर ऑल कोर्सेज, कि सारे कोर्सेज की मिला के जो अटेंडेंस बन रही है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, राइट. एंड योर अटेंडेंस विल बी अपडेटेड विद इन 42 आवर्स. इमीडिएट बेसिस पे अटेंडेंस इज नॉट गोइंग टू बी अपडेटेड, राइट. दिस इज द डमी रिपोर्ट. ये आपका टाइम टेबल नहीं है, डमी रिपोर्ट है टाइम टेबल की, हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक. जैसे अभी आप लोगों के लेक्चर्स जो है सैटरडे संडेज को ही होने वाले हैं, तो आपका यही स्लॉट सैटरडे और संडेज के स्लॉट ही जो है फिल्ड होंगे, वीकडेज वाले फिल्ड नहीं होंगे. देन कैलेंडर, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं by the university will be marked there. जैसे अभी आपकी क्लासेस आने वाली हैं तो your dates of your classes will be marked here for the, आप अपने इवेंट्स जो हैं वो खुद भी मार्क कर सकते हैं for your reference कि मैंने इस दिन, हमारी तरह से असाइनमेंट की डेट कुछ और है पर आप चाहते हो मैं एक दिन पहले सबमिट कराना चाहता हूँ, यू कैन क्रिएट योर ओन इवेंट्स हियर. देन टर्म प्रोग्रेस, आपके जो भी कोर्स वाइज प्रोग्रेस है, वीडियोस की अलग से एंड सेल्फ असेसमेंट की प्रोग्रेस जो अलग से है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. और ये जो टर्म प्रोग्रेस बार है ये ओवरऑल आपके जो पांचों कोर्सेज हैं उसकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो डिपिक्ट करेगी. यहाँ क्लिक करने से आप ये दोनों जो सेक्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, इससे इसके अलावा भी वहां पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज देयर. यू कैन चेक एंड इवेलुएट योरसेल्फ देयर. देन पेंडिंग असाइनमेंट्स, अभी आपका ये सेक्शन खाली आ रहा होगा. रीजन मीन कि अभी असाइनमेंट्स की ड्यू डेट नहीं है, जैसे ही असाइनमेंट की ड्यू डेट होगी दिस विल बी रिफ्लेक्टेड देयर. पेंडिंग इसलिए कि इस सेक्शन में जो असाइनमेंट्स हैं आपकी पेंडिंग रहेंगी, वो रिमाइंडर चलता रहेगा. अदर देन दिस देयर इज ऑल्सो अनदर इंटरफेस सीए सबमिशन करके होगा, जिसके अंदर आपने असाइनमेंट को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो. ये तो इसलिए जब तक आपकी असाइनमेंट सबमिट भी हो जाती है ना, वो पेंडिंग असाइनमेंट विल बी रिफ्लेक्टिंग देयर ऑल द टाइम. Then my message section, this is the most important section. इसको ये common messages नहीं है, ये message my message section is are the those, इसमें वो वाले messages आते हैं जो सिर्फ आपसे related है, जो ये आपके personalized messages हैं, जो हमने common announcement सब बच्चों को डालनी है. That announcement will be available under the announcement section. जो announcement to a particular student है वो इस section में आएगी. So never ignore these messages जो इस section में आएंगे. इसी मैंने आपको पहले ही बोला, वी आर ट्राइंग कि हम आपको कम से कम तंग करें. हमें डिस्टेंस एजुकेशन में भी नेवर डिस्टर्ब द स्टूडेंट. सिर्फ जब तक उनकी एडमिशन होती है तब तक हमारी कम्युनिकेशन अलग तरह से चलती है, बट आफ्टर दैट ऑल कम्युनिकेशन विल हैपन थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. हम आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट. नेक्स्ट इज योर मेंटर. शॉर्टली काफी बच्चों को मेंटर्स एलोकेट हो भी गए हैं, जिनको नहीं हुई हैं शॉर्टली दोज मेंटर्स विल बी एलोकेटेड. ये आपके पर्सनलाइज मेंटर रहेंगे. यू कैन फर्दर बुक योर अपॉइंटमेंट विद द मेंटर ऑल्सो, राइट. देन द मेन मेन्यूज, जब आप लॉग इन करते हैं ऑन द टॉप राइट यू कैन सी योर फोटोग्राफ, योर नेम, सेक्शन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर प्रोग्राम. प्लीज कीप चेकिंग दीज डिटेल्स वंस एटलीस्ट जब आप लॉग इन करते हैं. उसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगती है प्लीज रिपोर्ट टू अस. देन यू आर एडवाइज कि आफ्टर फर्स्ट लॉग इन प्लीज चेंज योर पासवर्ड. आप अपना प्रोफाइल भी फर्दर माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं. All the quick links available on the top bar are social media links है, my account section है, e-communication, exam connect, e-library, academic calendar, contact us, etc. are available there. अभी बहुत सारे हम interfaces add on करेंगे. See, we are also the first timer with you. नो डाउट रेगुलर में डिस्टेंस में हमारे ऑलरेडी हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने दिया हुआ है. रेगुलर में देयर इज यूएमएस, डिस्टेंस में नेम सेम है, LPU e-connect is there, but definitely you are getting the add-on features, majorly the e-content which you have got here, the recorded videos nobody is getting, even regular students are right now not getting that, you got it. तो धीरे जो भी इंटरफेसेस और हैं हम इसको एनहांस करेंगे और एनहांस करेंगे. बहुत सारी चीजें विद धीरे धीरे यहाँ पे ऐड ऑन होंगी. सो माय अकाउंट सेक्शन में क्या रहेगा, आपका आईडी कार्ड है, योर प्रोफाइल है, यू कैन एडिट योर प्रोफाइल ऑल्सो. स्टार्ट विद द आईडी कार्ड. सी योर आईडी कार्ड इज विजिबल एंड सब स्टूडेंट का विजिबल है. देयर आर ओनली थ्री अटेम्प्ट्स आर देयर कि आप 3 बार ही अपना आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हो टू अवॉइड एनी मिस यूज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. ये तो प्लीज प्रिंट वाइसली. फर्दर ये आईडी कार्ड के ऊपर यू कैन सी दिस QR कोड.
तो अगर आप जैसे कि आप ऑथेंटिक स्टूडेंट हो एलपीयू के, एलपीयू ऑनलाइन के, तो फॉर दैट मैटर व्हाट इज टू बी डन, आपको हमें बार बार अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। द क्यूआर कोड इज देयर, इसको स्कैन करेंगे तो वेबसाइट का एक पेज खुलेगा जहां पे आपकी जो डिटेल्स हैं, ये वाली जो डिटेल्स हैं, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फोटोग्राफ, योर प्रोग्राम, एवरीथिंग विल बी विजिबल ऑन योर वेबसाइट। एलपीयू ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां पे विजिबल रहेंगे। और क्यूआर कोड के अलावा देयर इज अ लिंक इन योर इंस्ट्रक्शन सेक्शन। इस लिंक को क्लिक करने पे भी आप डायरेक्टली जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे। वहां से आपका जो आईडी कार्ड है दैट कैन बी ऑथेंटिकेटेड, ऐसे दिखेगा वो। ऊपर टॉप आधा स्क्रीनशॉट है तो ऊपर टॉप पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा उस सेक्शन में। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी वेबसाइट को रीच चेक करके वहां पे जो एक लिंक है वेरीफाई योर आईडी कार्ड, वो डाल के आप चेक करोगे तो योर डिटेल्स आर देयर। तो कोई भी आपकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकता है कि आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो एलपीयू के। दिस इज योर प्रोफाइल। वी नो कि सर राइट नाउ आप लोगों को प्रोफाइल में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, योर फ्यू डिटेल्स आर मिसिंग हियर। प्लीज डोंट वरी, आपका कोई डेटाबेस मिस नहीं हुआ है। वी हैव योर कंप्लीट डेटाबेस विद अस। विद इन, अगर आप नहीं भी हमें अप्रोच करोगे, विद इन फ्यू डेज योर ऑल डिटेल्स विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। बट स्टिल इट्स राइट टू चेक योर ओन डिटेल्स। अगर इसमें फिर भी आपको कोई गड़बड़ लगती है, कुछ गलती लगती है, डू लेट अस नो, वी विल रेक्टिफाई। हम आपके लिए ही बैठे हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, वी ट्राई ऑन टू रेक्टिफाई दोज इश्यूज ऑन इमीडिएट बेसिस। देन फर्दर माय प्रोफाइल सेक्शन में माय जो एडिट वाला सेक्शन है उसमें यू कैन राइट नाउ आपको एक्सेस सिर्फ आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एडिट करने का है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर कुछ बच्चों ने मिस आउट किए हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं दी हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू दो स्टूडेंट, प्लीज अपडेट योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लीज शेयर दीज डिटेल्स विद अस ऑल्सो। देन द माय ई कम्युनिकेशन सेक्शन, अभी वहां पे मैसेजेस आ रहा है, वहां पे अनाउंसमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी कोई हिस्ट्री अनाउंसमेंट्स की खास नहीं थी, तो अनाउंसमेंट सेक्शन विल आल्सो बी देयर। अंडर दिस सेक्शन यू कैन चेक द हिस्ट्री ऑफ योर कम्युनिकेशन। जो भी हम आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं माय मैसेजेस के अंडर या ई अनाउंसमेंट्स के अंदर, तो अब अगर आप मिस आउट कर रहे हैं कोई अनाउंसमेंट या समथिंग, तो आप यहाँ पे इस सेक्शन में जाके डायरेक्टली उनकी हिस्ट्री जो है देख सकते हो, प्रीवियस अनाउंसमेंट, विच मीन्स यू कैन ऑल्सो सी। देन ई अनाउंसमेंट जो अभी आपके बिल्कुल बॉटम में, जो डैशबोर्ड का बॉटम है, बॉटम सेक्शन है, वहां पे अनाउंसमेंट, डेट वाइज अनाउंसमेंट्स आते हैं। जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट होती है वो अपर सेक्शन में आती है। देन माय मैसेजेस विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, आपको जितने भी मैसेजेस किए गए होंगे वो मैसेजेस इस सेक्शन में रिफ्लेक्ट रहेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन इज एग्जाम कनेक्ट। अभी आपको इस सेक्शन में ड्रॉप डाउन विजिबल नहीं होंगे। द रीजन मीन कि अभी असाइनमेंट सबमिशन की डेट्स नहीं है, डेट शीट की डेट नहीं है, अभी आपको एकेडमिक कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, रिजल्ट का नहीं है, कुछ भी ट्रांसक्रिप्ट का कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे ये डेट्स अप्रोच करेंगी, ये शेड्यूल्स आएंगे, तो आपका ये सारे इंटरफेस विल बी वर्किंग। इतने ही नहीं होंगे, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि दीज आर द फीचर्स यू विल बी गेटिंग, कि यही आएंगे सारे इंटरफेसेस। तो इसके अलावा भी यहाँ पे इंटरफेसेस जो भी, जैसे कुलविंदर सर ने मेंशन किया कि अगर आपकी री रजिस्ट्रेशन है, किसी रीअपेयर के लिए रजिस्ट्रेशन है, रिवैल्यूएशन के लिए रजिस्ट्रेशन है, ऑल रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम फॉर्म्स नहीं लेंगे। अगर हमें कहीं जरूरत भी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल कि अभी बीए में इलेक्टिव्स आर टू बी सिलेक्टेड। राइट नाउ वी आर कॉलिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ बीए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में उनके दो कोर एरियाज हैं जो उन्होंने सिलेक्ट करने हैं। फॉर दैट मैटर वी आर कॉलिंग टू द स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हमें कॉल पे वो अपनी डिटेल्स फिल करके दे दी हैं। फिर भी कुछ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने अभी नहीं दी। आई रिक्वेस्ट दो स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इवन टेकिंग आवर कॉल्स। अगर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग दो स्टूडेंट्स, प्लीज टेक आवर कॉल एंड गिव योर डिटेल्स ऑन द सिलेक्टेड कोर्सेज, ताकि हम आपकी क्लासेस शेड्यूल कर सके फॉर दोज कोर्सेज। बट यस, अभी जो मैंने एग्जाम्पल ये क्यों दी कि आज हम इसको ऐसे ले रहे हैं, बट फॉर यू ऑल, आप सबके कोर्स सिलेक्शन होने वाली है, सबके एप्लीकेबल है हर प्रोग्राम में। तो फॉर दैट मैटर हम ऐसे नहीं लेंगे। वी विल बी ओपनिंग द इंटरफेस इन योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पे आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो फिल करेंगे, आपसे वहां सिलेक्शन ली जाएगी। फॉर एवरी सेक्शन वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द इंटरफेसेस, द फीचर्स इन योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको तंग नहीं करेंगे बार बार मैनुअली उन चीजों को करने के लिए, राइट? तो दिस इज दिस, अभी ये नहीं है। अगेन आई एम सेइंग डोंट लुक फॉर दिस इंटरफेस। सीए सबमिशन, सीए सबमिशन इसलिए कि असाइनमेंट जो है आपको सीए का पार्ट है, कंटिन्यूअस असेसमेंट का पार्ट है। तो
यहाँ पे जब भी आपकी असाइनमेंट्स अपलोड होंगी, ये इसलिए कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि वो कैसा दिखने वाला है सेक्शन। तो अंडर दिस सेक्शन योर ऑल असाइनमेंट्स विल बी विजिबल कोर्स वाइज। सारे जो भी आपको रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज के अंडर असाइनमेंट्स विजिबल रहेंगी। इसको क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाके असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फर्दर द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कैसे है, जो भी आपके क्रेडिट्स हैं, जैसे कुलविंदर सर ने ऑलरेडी मेंशन किया कि कितने क्रेडिट्स पे कितनी असाइनमेंट्स होनी चाहिए। जैसे 4 क्रेडिट के लिए देयर हैज टू बी 2 असाइनमेंट्स, तो आपको 2 असाइनमेंट्स दी जाएंगी। इसको आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, यू नीड टू डाउनलोड योर असाइनमेंट। आप डाउनलोड करेंगे, प्री फिल्ड एक फॉर्मेट होता है जिसपे क्वेश्चंस, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर प्रोग्राम विल बी प्री फिल्ड। आपको वो डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर हैंड रिटन असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है। यू विल क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड योर असाइनमेंट थ्रू दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज वो मोबाइल ऐप से भी आप अपलोड कर सकते हो। सीधा इमेज खींच के भी अपलोड हो जाती है वो। तो दिस इज हाउ कि आप अपनी असाइनमेंट्स कैसे देने वाले हैं आने वाले टाइम में। देन डेट शीट, आपकी जो डेट शीट है वो इस सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। अगेन दिस इज राइट नाउ इज नॉट अवेलेबल। डेट शीट आपकी यही रिफ्लेक्ट होगी, कोर्स वाइज और सारी डिटेल्स उसमें आएंगी। देन योर एडमिट कार्ड वो भी यही आएगा। प्री फिल्ड फॉर्मेट रहेगा ये, जिसपे साइन, फोटोग्राफ, योर कोर्सेज, टाइमिंग ऑफ द क्लासेस, टाइमिंग ऑफ द एग्जाम, कहाँ होने वाले हैं, सब ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर ऑन दिस एडमिट कार्ड। यू विल बी अलाउड टू प्रिंट इट, आप प्रिंट करोगे और एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन। एग्जामिनेशन हो गया, डेट शीट हो गई। देन योर रिजल्ट भी आपका जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे ही विजिबल रहेगा। आप अपने मार्क्स व्यू कर सकते हो, ग्रेड्स व्यू कर सकते हो। फर्दर अगर आपकी रीअपेयर्स हैं तो रेगुलर और रीअपेयर दोनों के रिजल्ट आप सेपरेट भी देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज e-library. See, this platform will be accessed with your credentials of learning management system. आप इस पे क्लिक करोगे और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारा रिसोर्सेज है जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस प्लेटफॉर्म के सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप उसका मिस यूज नहीं कर सकते। कोई कॉपीराइट इश्यूज हैं या कोई भी जो भी आप बुक्स वहां से पढ़ने के लिए आप सब कुछ यूज कर सकते हो, दैट इज ओपनली अवेलेबल फॉर यू, बट उसका मिस यूज नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली कंसर्न। तो आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ यू कैन एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म। लॉग इन करने के बाद यू कैन सी योर रजिस्ट्रेशन ऑन द टॉप। सी here is your registration number और कौन कौन सी चीजें होंगी, ई जर्नल्स होंगे, ई बुक्स होंगी, कोई पुराने डेटाबेस हैं। ई बुक्स में फर्दर बहुत बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे, मोर देन 20 लाख ई बुक्स आर देयर और जर्नल्स एंड एवरीथिंग। हमारी फैकल्टी दिस प्लेटफॉर्म इज यूजिंग, जितने भी रेगुलर के स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं, दे आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। और ये अदर देन द ई बुक्स हैं, ये अलग रिसोर्सेज हैं जो आपके पास आपको एलएमएस में मिल रहे हैं। ये कंप्लीटली अलग रिसोर्सेज हैं, ओपन रिसोर्सेज। देन इज योर एकेडमिक कैलेंडर, जिसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी। योर इंपॉर्टेंट डेट्स आर देयर, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इज देयर, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या इसको रेफर कर सकते हैं फॉर अपकमिंग डेट्स। देन कॉन्टेक्ट अस डिटेल्स, जो भी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हैं वो आपके एलएमएस में प्रोवाइडेड है। आपको नोट अगर आपने नहीं करके रखी हुई तो वहां से ओपन करके, अगर आपको अर्जेंटली किसी भी सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एड्रेस इज देयर, वेबसाइट का एड्रेस इज ऑल्सो देयर, इंपॉर्टेंट ईमेल आईडीज आर देयर, इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स आर देयर, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। देन मोबाइल ऐप, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं उनके लिए ऐप इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। जितने भी iOS यूजर हैं, द ऐप इज अवेलेबल ऑन एप्पल स्टोर। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल डाउनलोड द एप्स एंड प्लीज लॉग इन टू दैट। उसको एक्सेस करना शुरू कर दीजिए, ये ऐसे आपको दिखेंगी वहां पे। और सर्च करने के लिए इंपॉर्टेंटली, आई फॉरगॉट टू टेल, इंपॉर्टेंटली यू नीड टू टाइप LPU ऑनलाइन। LPU ऑनलाइन आप टाइप करेंगे तो आपको ये एंड्रॉयड यूजर के लिए ऐसे विजिबल रहेंगी एंड आईफोन यूजर्स के लिए ऐसे। तो प्लीज डाउनलोड योर ऐप, हो सके तो प्लीज आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी योर लॉग इन स्क्रीन। जब आप लॉग इन करेंगे तो मोबाइल का जो डैशबोर्ड है, मैं यहाँ पे फीचर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन सो मच ऑफ योर टाइम, तो मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी। इंटरफेसेस तो मैंने ऑलरेडी इलेबोरेट कर दिए, वही है, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। कि जब आप लॉग इन करेंगे, ऑन द टॉप योर प्रोफाइल, डेफिनेटली योर प्रोफाइल इज देयर, हैपनिंग्स, और ये की फीचर्स हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए, इसके क्विक लिंक्स रहेंगे, योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पेंडिंग असाइनमेंट्स, टुडेज क्लासेस, माय जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऊपर ही टॉप पे हाईलाइटेड है, इसके क्विक लिंक्स हैं। आपका प्रोफाइल, सी एक चीज है कि जो मोबाइल ऐप पे फीचर्स हैं, जरूरी नहीं है डिट्टो सेम LMS पे जितने सारे फीचर्स हैं वो सारे नहीं अवेलेबल होंगे।
वी आर ट्राइंग कि हम मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको ऐप पे दे दें, बट टेक्निकली समटाइम्स फ्यू थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, लाइक दी ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू शो दीज लेक्चर ऑन द मोबाइल, बट वी डिड इट, यू नो। हमारे पास डेडिकेटेड टीम है आईटी की, जो भी हमारे डिस्टेंस में एंड रेगुलर में हमने एलएमएस है वो सारे इन हाउस डेवलप्ड है। सिमिलरली ये दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो इन हाउस डेवलप्ड बाय आवर ओन आईटी टीम। तो जब हम खुद करते हैं तो थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट डेफिनेटली विल डू इट। कि जहां भी आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज डू लेट अस नो। हम यहाँ पे आपके इश्यूज, आप वैसे तो हमें आने नहीं देने चाहिए आपको इश्यूज, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज प्लीज लेट अस नो, हम उसको क्विकली रिजॉल्व जरूर करेंगे। तो ये दीज आर द क्विक लिंक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर के हैं, पेंडिंग असाइनमेंट्स, टूडेज क्लासेस, माई मैसेजेस। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोर्सेज, आपको जो भी आपको रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं विल बी विजिबल लाइक दिस। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप फर्दर आपका जो लेक्चर है वो एक्सपैंड हो जाएगा। यूनिट वाइज इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे, एज आई अर्लियर टोल्ड कि यूनिट वाइज जब हम एक्सपैंड करते हैं तो मल्टीपल लेक्चर्स होते हैं, और हर लेक्चर जो है सेल्फ इज फॉलोड बाय द सेल्फ असेसमेंट, और ये यूनिट वाइज आपकी प्रोग्रेस है। यहाँ पे द वीडियो ऑन मोबाइल विल लुक लाइक दिस, और ओवरव्यू विल आल्सो बी देयर, या अदर रिसोर्सेज विल आल्सो बी देयर अंडर दिस सेक्शन आल्सो। अभी कुछ कुछ जैसे कि मैंने बोला, कुछ कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं हो। वी ट्राइड कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स हम आपको यहाँ दें। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आप अपनी असाइनमेंट्स जो है ऐप से भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। देन योर टाइम टेबल, वंस योर टाइम टेबल इज अप, वो टाइम टेबल आपका डे वाइज ऐसे व्यू होगा। योर मैसेजेस अंडर दिस सेक्शन, आपके जो भी करंट मैसेजेस हैं विल बी विजिबल अंडर दिस सेक्शन। अदर मेल क्विक लिंक्स आर देयर। उसके लिए ये ऊपर जो टॉप का बार है, टॉप सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करने पे आपका ये जो जितने भी अदर क्विक लिंक्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। व्हाट यू हैव अंडर दिस, होम है, जिस पे क्लिक करने पे आप वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अनाउंसमेंट्स हैं, ई बुक्स है, एलपीयू लाइव एक्सेस कर सकते हैं, क्विक लिंक टू लाइव क्लासेस, आप अपनी लाइव क्लासेस भी थ्रू थ्रू ऐप अटेंड कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी इज देयर, कॉन्टेक्ट अस, एकेडमिक कैलेंडर, ये सारे जो क्विक लिंक्स हैं आर अवेलेबल इन योर ऐप। लेट्स स्टार्ट। आई विल नॉट बी इलेबोरेटिंग, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अनाउंसमेंट है, इस पे क्लिक करने पे ऐसे आपकी अनाउंसमेंट्स व्यू होंगी डेट वाइज। ई बुक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ई बुक्स रहेंगी, ये कोर्स वाइज ई बुक्स विल बी देयर। देन एलपीयू लाइव, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका व्यू ऐसे रहेगा। सिमिलरली ये आपको वही ग्रुप्स यहाँ पे विजिबल रहेंगे। लाइव क्लासेस, यहाँ पे क्लिक करने पे अगर आप बाहर हैं कहीं या कहीं भी हैं तो फोन से आप आसानी से क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी, आपको अगर कोई रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो आप इस प्लेटफॉर्म, आप यूजिंग योर ओन क्रेडेंशियल्स आप वो एक्सेस कर सकते हैं। देन द कॉन्टेक्ट अस में इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी डिटेल्स आर देयर, एकेडमिक कैलेंडर यू कैन डाउनलोड, यहाँ व्यू नहीं होगा, आपको डाउनलोड करके यू नीड टू व्यू द कैलेंडर। एंड ऐप जो है वो आप लॉग आउट कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप सेशन अपना लॉग आउट किए बिना भी रख सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज डाउनलोड द ऐप। थैंक यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, मैंने होप मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्रीशा मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, ma'am, for this wonderful presentation. And, the Virtos, I would like to tell you all that this particular platform will be your forever buddy. So I hope you are clear with this. And yes, so I guess the Virtos are refreshed up and are ready for the next part of the induction ceremony. So you all would be having a question in your mind that how are we supposed to attend our online classes and how will we be giving our exams? So don't worry, the upcoming module will generally familiarize with you all, like how will you attend your online classes, and you, as you all know that you would be giving your exams in online mode through my class platform, so it will also familiarize you with the online examination system. And for this, I would like to invite the Assistant Professor, COD, Academic Information Cell, Division of Academic Affairs, Mr. Tushar Tyagi, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to present LPU my class to the students over here, right? So I guess my screen is visible. Yes, sir. Okay, thank you so much.
So we are going to discuss the synchronous mode of teaching right now, because the you will be having some online classes which you are be going to have in upcoming days. So all the classes are going to be held on LPU My Class. It's an online teaching platform. It's specially designed for online classes, like having features which are enabled the delivery of lectures in a most participative, where your participation will be important. And furthermore, the platform offers several features which would be synchronized with the learning, right? So I'm going to discuss one by one different features, like how will you join the class, what particular features are there, how would you interact with your teacher, right? And how could you raise your query, and how would you increase your participation so that the learning would be enhanced, and so on. So let me start LPU My Class. First of all, like already Neha ma'am has already given the domain for this particular platform, that is myclass.lpu.in. Once you log in over there using your credentials provided by the university, like your registration number and password, this is the first page that you would see. Over here, to access the classes, you need to click on View Class Meetings. Over here, you would see the classes planned for you for a particular day, right? After clicking on View Class Meetings, right, you would see this particular window, right, where the classes will be shown for a particular day. uh, and there are certain legends are given for a particular class. For example, if the class is going on, that will be shown in green color. The classes which are yet to be held, that will be shown in blue color. And we also have this calendar view over here. Also, you can access the classes planned monthly, weekly, or by the day itself, right? So for example, you want to enter a class, so all you have to do, this is another way to show these classes planned. All you have to do, just click on that particular class which are yet to be coming. For example, you can enter into the class just 3 minutes before the scheduled time, right? So for example, if a class is planned for 10 to 11, you could enter at 9:57 into the class. After entering into the class, this is the interface that you would see. We call this area over here, right, where there is a lovely professional university is written, we call it as a presentation area, right? So this presentation area will be visible at the student side. Whatever PPT or document or any learning which is delivered by the teacher would be visible in this particular area, right? You would have an option to chat with your particular teacher, right? Also, you can have this public chat option, and also you can chat with the teacher privately as well through this interface if the teacher has allowed to you. These are the list of participants basically who have joined your class. You could see over here that the square icon means that is your teacher, and circle icon would resemble that a particular student, right? We have also provided an option that in case any query you are having, do not interrupt the class in between, just raise your hand. The teacher will know that a particular student has raised their hand, so he will ask you to ask your query and you would be allowed to speak. Whenever the online teachings are happening, so teacher generally gauge the learning, that how much a particular student have been perceived from the teacher. To test that, the teacher generally throws a quick quiz where you would be answered some query, right? So in quiz, for example, in front of you, this you could see, this is a student side view where a particular teacher has asked a query. Okay, what is the national income estimates in India are prepared by, right? So 4 options are given, A, B, C, D, right? So teacher would give you the option to select A, B, C, D from their own interface, right? Like this, he would select A, B, C, D from here. This you could see A, B, C, D, and at your window on the right hand side bottom corner, you would see the options are popped up on your screen, A, B, C, and D. So you can select the correct option from there. Whether you would like to select A, just click on A. Otherwise, B, C, and D, depending on the case. The teacher will get the real-time analytics of a student response. As you could see, these features is not available anywhere on any online teaching platform. That's why this platform is made specifically for the online teaching. So teacher can see the real-time analytics that which particular students have selected which option,
right? And how many students have selected option A, how many selected B, C, and D, and so on, right? So by this, the teacher can gauge, okay, so most of the students have given the right answer. Let's say the C is the right answer. So he could say, okay, now the whatever I want to convey to my students has been done. And when the teacher publishes the result, that will be shown to the student as well. Okay, how many of students have selected which option is also visible to the particular student as well. Breakout room, this particularly, which makes this particular platform, exclusive for online teaching, is the breakout room. In breakout rooms, basically a teacher, divides some students into the groups where they would have a discussion between them, and teacher can move from one room to another to, participate in the particular discussion, and could guide the student. Okay, now this particular problem I gave you, now discuss with your own group, right, and come up with the solution. So he would move from one room to another to check the progress and so on, right? So teacher creates a particular breakout room with please, I request you all keep yourself muted during the discussion, and that's how we can, I would be able to convey whatever this the feature of this particular platform. Please mute yourself, right? So the teacher can create a breakout room so that he could divide the students into the groups. You could see the teacher will select create breakout rooms, right? Then the teacher will select for how much duration this particular breakout room will work. So he would give the duration, divides the students in the groups, right, and could move from one group to another, right? So there will be option at the teacher side, uh, that he wants to join the room 1 or in the room 2. Lecture recording, as I've already told, because in the online teaching, sometimes, you missed your classes for some reason, or for some part you have missed. So what you want to do, that you want to come back again for that particular lecture in the recorded fashion, right? So every lecture is recorded automatically, and you could access it at any point of time. After 24 hours of the online delivery of the lecture, the recording is available. Now I'll show you that how you could access this particular recording of a particular lecture. Again, you need to log in at myclass.lpu.in, click on view class meetings, right? You would see a particular day. Let's say I'm accessing this particular platform at 30th of December, but I want to check the class for a December 2, right? So what I would do, I from the calendar, I would click on 2nd December. It will show the class. Let's say I want to access ELE 310. In your case, it may be your own course code, right? So just click on that particular class. The date will change automatically, and the calendar will jump to December 2. Just click on that class, and you would see that recording is available over here. Means if it is shown in green color, that means the recording has been processed and you can access it, and it would have such kind of a view where teacher camera will be shown, right? And whatever the teacher has been shared at the presentation area, that will be shown, and the chat which is going on at a particular time will be shown to the student who is accessing the recording of that particular lecture. Here we have created some video series specifically designed for you, so that at a later point of time, because it is not possible to absorb all the features immediately. So if you want to come back again, that how to join the class, you could access these videos, which would be helpful for you to access the interface and to know the features. Now, like so many times, and it is a mandate by the regulatory bodies, that the in online delivery of courses, that the exams must be proctored. Proctored means there must be a person who is checking the all the students who are sitting, that what particular work they are doing, so that they could be proctored, and the examination would be fair, and you would be having a platform from which you could be proctored, right? But to have a proctored examination, there are several things that permissions must be given by the student side as well, like their camera, their microphone permissions. Like I told you previously, location, camera, microphone, allow everything.
right? For example, there is an exam planned for a particular date. You know, whenever we are having an exam in online mode, we have given a window, right, in which you could enter into the examination, right? If that window is over, you would not be able to enter into the exam. So it is advisable, whenever you are having your exam, you would be must well prepared, check your devices, check your internet, right? So let's see that how would you enter to give a particular exam, what particular permissions need to be given, right? So for example, I'm having a test, so just click on the open test. It is designed for a particular date. Click on open test, right? You could see some of the tests have been expired, means they have already done. And for some examination, you could see the entry stopped, means you have not joined that particular exam within the time frame. Now I told you that you need to allow the permissions, like I told you before. We call this particular check as environment check, means this particular module will check whether your devices by which you are giving examination are compatible or not, right? This must be done at least half an hour before your exam, right? It will check the operating system that you are having, it will check the browser, it will check your speaker that you are having, right? So I will discuss one by one, right? For example, to check the speaker, there is a 1 second audio is there. If you are able to hear it, just click on yes, and you will clear that particular check, right? Microphone, it will test, right? And also the webcam that you are having will be also tested. Like you could see that there is a green icon coming on the face of the particular student. That means that your face is visible at the webcam. It will be clearly visible. Only then this green signal will be given. That means you could see that all the checks of operating system, browser, audio, webcam, microphone, and location are green signal. You are good to go. So all you have to do is just click on continue to test, and you would be able to give your exam. That's how, this is the proctor's view. Basically, the proctor would be able to check your webcams, right? He could check what you are saying. He could check uh, the real-time information within the microsecond level, means he's tracking your activity continuously throughout the examination, right? And all the data is recorded in real time. If there is any kind of unfair means are there, your exam can be blocked, right? So I request you all that you would be fair with the examination system, give all the permissions required, only then you could enter into the exam. So with this, I thank you all for listening me so patiently. And at the end of the lecture, I guess we would have the doubt clearing session. Thank you so much. Over to you, Prisha. Thank you so much, sir, for this descriptive presentation. And moving further, we at Lovely Professional University believe that our students should get the most out of the innumerable opportunities beginning from innovation and research, library system, academics, to other endless opportunities provided by the university. And we also believe that our students should stay connected with us, and all your doubts, queries gets answered, and all your problems get resolved too. So this module will mainly focus on the student support services and website that will keep you connected with the university. And for this, I would like to invite the senior officer of Center for Distance and Online Education, Miss Anna Vinocha ma'am. Thank you, Prisha. Thank you so much. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yeah, so first of all, I would like to congratulate all the LPU enrolled students. I welcome you all to the LPU family. So yes, you are a family now. So this session is all about the support services which you guys gonna get during your course time. And yes, I'm going to brief a little about the website also. So let's start. So first of all, I would like to tell you the medium through which you can reach out to us. So there are two mediums. One is you can email us, and second one is our helpline number. So we have created 5 email IDs to support you. So primarily you will be using the first 3 email IDs, but yes, in case your query is not resolved at any of the level, we have email IDs of higher authorities also, which is vc@lpu.co.in, and the second one is director@lpuonline.com.
So all this information is present in the contact us section of the website also. So yes, you can access the information from there as well. So as I said that primarily you will be using the first three email IDs, which is help@lpuonline.com. Second one is placements@lpuonline.com. And the third one is examinations@lpuonline.com. So yes, you can email us your queries and we'll get back to you within 72 working hours with a solution. Some queries might take a longer time to resolve, but yes, we'll definitely let you know the timeline for the same. Help email ID is created for resolving your general queries, like if you have any issue related to your LMS credentials, your personal details updation, your certificate queries, you can email that to help@lpuonline.com. Any kind of assistance related to placement, so you can email that query to placements@lpuonline.com. And if you have any query related to your examination, for example, your exam conduct, your my class platform, any marks related issue, you can email to examination@lpuonline.com. So second one is our helpline number, which is 01824 520 500. So I would advise everyone to just note down this number. And the working hours are between 9 a.m. to 5 p.m. So we have a support team which would be available to answer your queries and provide you with the best solution. You can call them Monday to Saturday anytime between 9 a.m. to 5 p.m. The team is there to provide you the right guidance. Next, we'll talk about the support which you'll get in terms of placements. So university provides opportunities to each and every eligible students by informing them time to time about all the placement drives. The objective is to build the relevant skills and the competency in order to ensure your holistic growth. And as I mentioned earlier, if you have any placement related queries or questions, you can email those queries at placements@lpuonline.com, or you can call us also. So under placement support, we conduct professional enhancement program under which special classes are organized, in which we train students in aptitude, reasoning, soft skill, and interviewing skills. So the objective of this program is to enhance students' capabilities and to make you job ready, basically. So as I said that under professional enhancement program, we will teach you soft skills, and yes, mock interviews will also be conducted so that you should know what to say and what to do during an interview and get a feedback. So this interview will help you to evaluate yourself in terms of your body language and your confidence. Next is we are going to conduct guest lectures and online workshops where you will learn directly from the eminent speakers, and they'll share their real life experience. So you'll definitely get benefited from those lectures, and we're going to conduct those lectures on frequent basis. Next, as initially we said that you will get all the opportunities which regular students are getting. So yes, you can undertake your research endeavors through our world-class research facilities and infrastructure of the university, including central instrumentation facility, industry-sponsored collaborated labs, intellectual property development and research conferences, etc. And also we have a team of mentors to assist students who are coming with the business ideas. So to provide you entrepreneurship training, students can avail the entrepreneurial avenues offered by the university through its incubation centers. And yes, you get equal opportunities to witness and participate in the various mega events conducted by the university. In the past, from President to Prime Minister, LPU has had the honor of hosting many distinguished visitors. LPU is never short on inspiration. So in the past, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, also inaugurated the 106th Indian Science Congress at LPU. So you'll get a chance to witness all these events. And yes, you have heard of one word event. So students from all the states of India and over 40 plus countries of the world come under one roof and perform. So you have the chance, you have the opportunity to participate in such cultural and sports events organized by the university. Next, I'll brief about the website. So I hope you know the link of the website. If don't, please note it down. It's www.lpuonline.com.
So you can access the website through this link. And as you can see, this is the home page of the website. And on the top right, you can see the button of LMS login. So if you want, you can log into to your LMS through the website also. And from your perspective, from the perspective of the enrolled student, you can download 2 documents from the website. One is program guide. So you can get those program guides from the curriculum section of the program. And as Neha ma'am already briefed, that program guide will help you know about the program structure, schemes, and detailed information about your courses and electives. The same is also available on the eConnect portal also. And the second document is the important dates document, which is available in the footer section of the LPU online website. It contains all the important dates you will need to know throughout your session. So these 2 documents you can get from the website, and also you can log in to the LMS through the website. And yes, there is a contact us section where you will get all the details regarding the emails which I have mentioned in the first slide, and the helpline number also. So last but not the least, I'll talk about the social media presence. Yes, LPU Online is present on all the social media platforms, whether it is Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. So these are the links, and this is how the pages look like. So I would request and I would advise everyone to please go like and share these pages so that you will get all the social media updates. As any event, any workshop we are going to conduct in future, we'll definitely going to update these things on our social media platforms also. So I would request everyone to please like these pages, so that you don't miss out any information. So I'll do one thing. I'll share these links over the chat section so that you just check out those pages and like them. Just a second. So these are the links. You can just check them out and like these pages. That's all from my side. I hope now you all are aware about the support services which you are going to get in future. And congratulations once again. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am, for enlightening our voters with all the innumerable opportunities provided by lovely professional university.